अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी इशान। और आज की इस वीडियो में एज प्रॉमिस्ड मैं आप लोगों को आज सिखा रही हूँ कि स्क्रीन रिकॉर्डर की ऐप कैसे यूज़ करते हैं। आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि आप लोग स्क्रीन रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे विद द हेल्प ऑफ द स्क्रीन रिकॉर्डर, जिसकी ये है जो मैंने आपको ऐप अपनी लास्ट वीडियो में बताई थी। So let's begin, shall we? First of all, जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऐप है वो ऐसी लगती है, ऐसी दिखती है। Basically when I press this will appear and my record कि मैंने कितनी अभी तक की हैं, प्रेजेंट की हैं या कितनी रिकॉर्ड की हैं, उस सब के रिकॉर्ड यहाँ पे आ रहे हैं मेरे पास। So basically the next thing is that जब आप करते हो प्रेजेंट when you open the app actually, तो फिर आपके पास ये साइड पे ब्लू आइकन नज़र आता है। जब आप इसे प्रेस करते हो तो आपके पास ये ऑप्शंस आते हैं। सो दिस बेसिकली मीन्स कि आपने स्टॉप करनी है वीडियो, एंड दिस मीन्स कि आपकी रिकॉर्डिंग फिनिश हो जब आपने अपनी रिकॉर्डिंग फिनिश कर ली होती है। When I click this, there will be my picture. Okay, there will be like picture in picture with me, and when I press this will double the size of my picture, and when I press this, then there will be no more picture. So this is for settings. Now when we go to the settings here, as I've shown you, so we have basically many settings like control. First is stop recording on screen. Yes, I have enabled pause button as well. Movable control panel. I haven't done that. Hide control panel, that is a little difficult actually, where आपको पता नहीं चलता. And then you have video resolution, that is the size of the video that you want in it. Then record audio, yes of course, and we have audio resource, which is a microphone, and the audio settings. Then other we have privacy policy and terms of service. So control settings भी बहुत छोटे हैं, and when need your help, which means that you can tell a friend about it, like this share icon you have, and then you have rate 5 stars, that is for rating of course. And इसकी settings इतनी ज़्यादा नहीं है. So basically now I will show you how to pause. मैं ये वाला बटन प्रेस कर. So now basically मैंने pause करके आपको unpause like continue करके दिखाया. So basically this is a really good recording app. So as promised मैंने आप लोगों को ये आज सिखाई है, and next time भी मैं आप लोगों को next वीडियो में YouCut सिखाऊंगी. So please subscribe the channel for that.